Yeah, question number 27. इन क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप लोग को ये लग सकता है इट इज बिलोंगिंग टू एस ब्लॉक, बिकॉज आप लोग को कॉन्फ़िगरेशन में 3d to 4s2 जैसा दिया है, बट एक्चुअल में क्या होता है, आफ्टर फिलिंग द 4s यू विल बी फिलिंग द 3d, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद 3d फिल होता है. So the last electron has entered into 3d subshell but not 4s. Okay, hence the block of the element will be d block, right? सब लोग ने किया होगा. Okay, okay. Then question number 28, which has minimum ionic radius. Minimum ionic radius. So first of all, you need to identify all these are they isoelectronic? K positive को छोड़ के बाकी isoelectronic है ना. ये जो K positive है, the shell of this is third shell. ये second shell है, ये भी second shell है, ये भी second shell है. In sodium positive, you have 11 protons. In N3 minus, you have 7 protons. In F minus, you have 9 protons. More the number of protons in an isoelectronic species, more will be the attractive forces. जितना ज़्यादा attractive forces होगा, the electrons will be closer to the nucleus and the size will be lesser. So the minimum ionic radius is for Na positive, because it has 11 protons. And N3 minus में भी 10 electrons है, Na positive में भी 10 electrons है, F minus में भी 10 electrons है. K positive comparison में ही नहीं है, because it is belonging to third shell. Question number 29. In which of the following there is a drop in ionization energy? Beryllium to boron. Expected क्या है? Left to right Z star increases, so the ionization energy must increase. So boron being right side of beryllium, boron must have a greater ionization energy, but because of penetration effect, beryllium में you are removing the electron from the s orbital. In case of boron, you are removing the electron from p orbital, and s orbital is penetrated more towards the nucleus, hence it is more attracted by the nucleus. So if you want to remove the electron from an s orbital, it is relatively difficult when compared to removal of the electron from the p orbital. So इस particular case में beryllium to boron there is a drop in the ionization energy. So option A is the right answer. बाकी भी check कर लेते हैं. Oxygen to nitrogen. Even though oxygen belongs or oxygen is present to the right of nitrogen, which is having greater Z star, but in case of nitrogen, you are disturbing half-filled configuration. Half-filled configuration is relatively stable, so you need to put more ionization energy in nitrogen when compared to oxygen. So oxygen to nitrogen, there is an increase in ionization energy. Drop नहीं हुआ, so वो answer नहीं होगा. Silicon and carbon. Carbon के नीचे silicon रहता है ना, down the group एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके, सो सिलिकॉन और कार्बन में कार्बन ऊपर रहेगा, सो कार्बन विल बी हैविंग ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी. सो वो भी नहीं है. सोडियम टू नियॉन. नियॉन नोबल गैस है, सो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा. मोर ओवर नियॉन में यू हैव सेकंड शेल, इन सोडियम यू हैव थर्ड शेल. सो आंसर इज ए. ओके, यस सर. क्वेश्चन नंबर 30. ये तो कर लिया होगा सब लोग. देयर इज अ सडन जंप आफ्टर द फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी. सो वहां तक जितना भी आपने बाहर निकाला, which are 4 electrons, those 4 electrons are valence electrons. So see for the element which has 4 electrons as valence electrons. Sodium has only one. Sodium has 1 electron. Silicon has 4 electrons. This has 7 electrons, na? Yes sir. Chlorine 7 electrons. Calcium has 2 electrons. So answer is B. Okay. Again, देखो सारे क्वेश्चन एक जैसा ही है. आप लोग को 100 स्कोर करना चाहिए था इसमें. The first ionization potential in electron volts of nitrogen and oxygen. You need not know the values. आप लोग को comparison पता होना चाहिए. Out of nitrogen and oxygen, which has greater ionization energy? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन ज्यादा रखो, ऑक्सीजन का कम रखो. नाइट्रोजन ज्यादा मतलब दो वैल्यूज दिया है 14.6 13.6. So 13.6 should be of oxygen, 14.6 should be of nitrogen. So answer is A. Okay, you need not know the exact values. This is not like Bohr's theory. Bohr's theory में जो exact values हमने calculate किया है वो नहीं कर रहे हम. Question number 32.
M3 positive has an electronic configuration of argon 4s2 3d10 M3 positive के लिए. So M के लिए क्या होगा configuration? It will be argon 4p3. 4s2 3d10 4p3. Yes, sir. Okay, इसका 3 पॉजिटिव अगर हमने किया तो वही आएगा 4s2 3d10. So it belongs to which block then? P block. C block. P block. P block. Which transition involves the maximum amount of energy? ये क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन आया क्या? D. 2 positive to 3 positive because you are removing an electron from a positively charged species. आप लोग को ऐसा कुछ कंफ्यूजन आया होगा, इनकेस आया तो बी वाला पार्ट में देखो. You are removing 2 electrons. X माइनस को पहले X में कन्वर्ट करके उस पर्टिकुलर X को फिर से X पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो इसमें ज्यादा एनर्जी लग सकता है करके आप लोग को लग सकता है. नहीं, इसमें ही ज्यादा एनर्जी लगता है. इनफैक्ट ये वाला एग्जांपल एक लेते हैं. देखो I1 I2 पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ये दो का सम ही आई थिंक दिस इज लेसर देन द I3 34.5 है. ये दोनों को सम करने के बाद भी वो कमी है. सो 2 पॉजिटिव टू 3 पॉजिटिव थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखो ज्यादा एनर्जी लगता ही है. ओके, यू आर रिमूविंग और सेपरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डबली चार्ज्ड. 2 पॉजिटिव वाला से सेपरेट करना और ज्यादा मुश्किल होगा. सो आंसर इज डी ओनली. आंसर इज डी. Question number 34. Ionization potential of lithium positive. Lithium positive मतलब it is isoelectronic to helium. Yes, sir. Okay. Hello. Excuse me, it got disconnected again. Who is the host? Sir, you are. मैं ही हूँ क्या? ओके ओके. Hello. Thank you. Yeah. So metallic radius जो है वो precise और it is intermediate ना, बीच में रहेगा. Van der Waals radius is the highest. So B has to be highest and Coulomb radius is the least. So answer is A. Sir, please can you Yes, explain sir. 34th again? 34 ionization potential of lithium positive बोल रहे हैं ना. लिथियम पॉजिटिव और हीलियम के बीच में हमको कंपेयर करना है. लिथियम में यू हैव 3 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स.
In helium, you have 2 protons and 2 electrons. So even though both of them are isoelectronic, दोनों में 2 electrons है. In case of lithium, there is a positive charge. Separation of an electron from a positively charged species will take more effort when compared to a neutral species. Or else that can also be seen by इसमें 3 protons 2 electrons का attract कर रहे हैं, इसमें 2 protons 2 electrons का attract कर रहे हैं. इसमें attractive force ज्यादा होगा ना, so इसके अंदर से electron निकालना मुश्किल होगा. So the ionization potential of Li positive is greater than that of helium. Okay? Yes, sir. Yes. Question number 35 clear है सबको? 35 Yes, sir. में are given Yes, radii. हमारे पास order क्या है everyone? Order is covalent radius lesser than, metallic radius lesser than, metallic Van der is Waals. called as crystal radius. Van der Waals. So you need to assign this. 102, 100 जो है सबसे least है ना, 100 less than, 102 less than, 109. So 109 जो है Van der Waals radius हुआ, 100 जो है covalent radius हुआ, और 102 जो है crystal radius हुआ. Which of the following is isoelectronic with carbon? This is one of the easiest question which I can give. Isoelectronic with carbon. Carbon has 6 electrons. 6 electrons Yes. किसमें है? And positive. And positive. Good. ये भी 37 भी आसान है. Isoelectronic मतलब you need to see for the total number of electrons. You should not just compare the valence electrons. Okay. Isoelectronic इसमें भी कौन होगा? B. B. NO positive. You have 14 electrons. C2 minus 14 electrons. Cn minus 14 electrons and 2 14 electrons. So answer is B. Question number 38. The correct order of radii is पहले सब कंपेयर करते हैं. नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड बोरॉन. नाइट्रोजन इज लेस देन, बेरिलियम इज लेस देन बोरॉन. नाइट्रोजन इज लेस देन बेरिलियम. ये सही है ना? नहीं, बोरॉन इधर होगा ना? नहीं, नाइट्रोजन, हाँ नहीं, नाइट्रोजन और बेरिलियम के कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं. नाइट्रोजन और बेरिलियम वो दोनों में सही है ना? नाइट्रोजन इज लेसर देन बेरिलियम, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, राइट? Yes, sir. बट बोरॉन के केस में बेरिलियम इज लेसर देन बोरॉन करके दिया. बोरॉन हैज टू बी लेसर देन बेरिलियम. सो ऑप्शन ए गलत है. ओके. ऑप्शन बी F minus less than, O2 minus less than, and 3 minus. All of them are isoelectronic. Yes, sir. Okay. F minus में you have 9 protons, इसमें 8 protons, इसमें 7 protons. Protons जितना कम होगा साइज उतना ज्यादा होगा ना? Yes, sir. So सही है. Correct. Option B is right answer. Sodium is less than lithium. Sodium is greater than lithium, right? Sodium का third shell है, lithium का second shell है. Fe इसमें order क्या होगा? जितना ज्यादा positive charge रहेगा साइज उतना कम रहेगा. So Fe4 positive will be less than, Fe3 positive will be less than, Fe2 positive, right? Yes. Okay. Okay. Question number 39. Cl minus and K positive और isoelectronic. देखो सारे क्वेश्चन एक ही एटॉमिक रेडियस के ऊपर ही है. Yes, sir. एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी दो ही है. Cl minus and K positive are isoelectronic, then Cl minus is relatively larger because it has lesser number of protons. Answer B. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Isoelectronic के केस में आपको Yes, इतना ही देखना है, protons देखना है. जितना ज्यादा protons रहेगा साइज उतना कम रहेगा. So क्वेश्चन नंबर 39 सब लोग से बन जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 40. Largest size. Again देखो Cl minus H2 minus ये दोनों isoelectronic है. Na positive F minus isoelectronic है. But Cl minus and H2 minus they are in third shell, right? Third shell का size ज्यादा होगा when compared to the second shell. So H2 minus will be the answer, right? Yes, sir. Okay. Question number 41. Aluminium or magnesium? Aluminium group number 13. magnesium group 13. number 2. 2. Okay. 2. 2 has greater ionization energy than group 13. What is the reason behind that? Option C. C. Option C.
It is because of penetration effect, na? Yes. Yes, sir. Yeah. Okay. 42. IE1 and IE2 are given. So they are asking, so Mg converting into Mg positive plus electron. Mg converting into Mg positive plus electron, उसके लिए एनर्जी कितना है? 178 है. ऐड करना है दोनों. बस Mg positive converting into Mg2 positive plus electron, उसके लिए एनर्जी कितना है? 348 है. If you are adding equations 1 and 2, तब क्या होगा? देखो, Mg positive cancel होगा. So Mg will convert into Mg2 positive plus 2 electrons. So you need to add the energies to 178 plus 348 526. plus 526. Okay. Clear? Yes, sir. 43rd. Ionization energy of nitrogen is more than that of oxygen because the reason for this is because of the stability of the Half-filled configuration. Half configuration. filled p orbital. So answer is B. Direct है ये. Yes, sir. Question number 44. The ionization energy of sodium, magnesium, aluminum and silicon. First ionization energy के बारे में पूछ रहे. What is the overall order? वो groups का order बताओ. सबसे ज़्यादा group 18. 18, उसके बाद 17, 17. उसके बाद 15, 15, उसके बाद 16, 16, उसके बाद 14, 14, उसके बाद 2, 2, then 13, 13, then 1. then 1. Okay. 18 greater than, 17 greater than, 15 greater than, 16 greater than, 14 greater than, 2 greater than, 13 greater than 1. और else इसमें सिलिकॉन सबसे ज्यादा और else सोडियम सबसे कम. Na less than, magnesium is supposed to be less than aluminium, but वो greater है. Greater than aluminium, which is less than silicon. So answer is A. A is the right answer. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Question number 45. Same question हमने क्लास में भी किया. B. Phosphorus. Option B. Yes. Yes, sir. Okay. Question number 46. Incorrect statement. The first ionization potential of aluminium is less than. वो तो सही statement है. Less ही होगा. The Yes, second sir. ionization energy of magnesium is greater than that of second ionization energy of sodium. Second ionization energy मतलब after removing one electron. Mg positive में the configuration is Wrong state. 281. Na positive में the configuration is 2,8. So Na positive जो है, you are removing the electron from the second shell. Moreover, this is noble gas configuration. Mg positive में you are removing the electron from the third shell. So किसका एनर्जी ज्यादा, किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा? Na positive. Na Na positive. positive. So B is the wrong statement. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. The first ionization potential of sodium is less than the first ionization potential of magnesium. वो सही है ना? The third ionization potential of magnesium is greater. Obvious that third ionization energy में you are removing the electron from second shell. So only B is the wrong statement, or it is the right answer for this. Question number 47. More active metals are on the left side of the periodic table. सही है ना ये? आप लोग Yes, sir. 10th से पढ़ता आया. Yes. Okay. Less active metals are on. देखो, answer should be among A and B only. क्योंकि दोनों statements गलत तो नहीं हो सकता ना. मतलब हो सकता है मीडियम, ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट ठीक है. मोर एक्टिव मेटल्स दिया है, लेस एक्टिव मेटल्स दिया है, सो दोनों में होना चाहिए. रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस डाउन, मूविंग डाउन द ग्रुप. रिड्यूसिंग पावर का मतलब अभी हम Giving electron. रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरे चीज को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा. ऑक्सीडेशन का मतलब हमने क्या लिखा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Yes. ओके. रिड्यूसिंग पावर एंड ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर ये जल्दी ऑक्सीडेशन हो गया मतलब दूसरे चीज को जल्दी रिड्यूस कर पाएगा. डाउन द ग्रुप, व्हाट हैपेंस टू आयनाइजेशन एनर्जी? Decrease. Decreases. So it is easily giving away the electrons.
इसका मतलब उसका रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, रिड्यूसिंग पावर decreases moving down the group, नहीं increases moving down the group. इसके बारे में हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, डोंट वरी. पर दिस आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग को मैंने समझाया नहीं है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर इज ए. A. A. ओके, आंसर इज ए. दोज हु डोंट नो अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनफैक्ट सारे लोग को पता नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं. ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इसमें है, वो भी हमने पढ़ा नहीं है. सो उसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है. सो आइडियली 48th क्वेश्चन मस्ट बी एन ऐड. इट्स ओके, इट्स ओके. ठीक. क्वेश्चन नंबर 49 है. Second ionization energy is always higher than the first ionization energy. What is the reason for that? Positive charge बढ़ता गया तो the electron will be more bound to the nucleus. Okay, so answer is B. हाँ B tightly bound. ये हमेशा जरूरी होने की जरूरत नहीं है, octet आ जाना. Okay, need not be valid for all the atoms. So ये नहीं होगा. Electron is attracted more by the core electrons. Electron will always be repelled by the electrons. So ये भी नहीं है. Question number 50. Alkali metals मतलब First one है. group 1. Group 1 is the alkali metals. So if there is after removing an electrons, there has to be sudden jump. क्योंकि group 1 में you have only one valence electron. Sudden jump किस में दिखा? C option में. So the answer is C. Okay. Okay. Any doubts? पूरे पेपर में the paper is relatively very easy. Above 80 marks तो आना चाहिए था. जो लोग 80 के above स्कोर किया, very very good. In fact 90 के above होना चाहिए. ठीक है. All the questions are of same model, either ionization energy or they are based on atomic radius or ionic radius. Okay, we will continue with the last lecture में हमने क्या पढ़ा? Last lecture में I think we have solved some questions and then सारे क्वेश्चन से किए थे लास्ट लेक्चर में. ओके ओके, लेट अस गो टू एक्सेप्शंस इन आयनाइजेशन एनर्जी. जनरल ट्रेंड तो आपको पता है. व्हाट इज द जनरल ऑर्डर फॉर आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड? एनीवन? Left to right, ionization energy increases. लेफ्ट टू राइट, ये तो जनरल ट्रेंड हो गया, बट ओवरऑल हम देखते क्या है. ग्रुप 18 ग्रेटर देन, वो बताओ सब लोग ऑर्डर. 15 greater than 17, 17, greater than 15, 15, 15 greater than 16, 14, 16 greater than 14, 14, 2, greater than 2, then 13 and 1. 13 and 1. वेरी गुड. ये तो आप लोग सब लोग को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कंपैरिजन ऑफ IE1 और IE2. You can expect the question directly. Comparison of IE1 or IE2 in your final NEET exam or JEE mains exam. Okay, so remember that particular order. सब लोग स्टार मार्क कर लो ऑर्डर को. Next exceptions important है because you will get direct questions from the exceptions. As I said, there can be many exceptions, many other exceptions, but the exceptions which are listed out in NCERT textbook, वो तो आप लोग को याद होना ही है. Okay, so let us start with our first exception. Okay. In case of atomic radius, we have seen the first exception for group 13 elements for the size of aluminium and gallium. याद है आप लोग को? Yes. Out of aluminium and gallium, which has greater Z star? Out of aluminium and gallium, which has greater Z star?
गैलियम गैलियम ओके क्योंकि गैलियम से जस्ट पहले we have filled 10d electrons whose shielding power is very very less. Because of that poor shielding, expected क्या है, Z star has to be same in the group, but हुआ क्या, Z star of gallium is greater than the Z star of aluminium. Okay, and based on number of shells, which has greater shells? गैलियम गैलियम हैज ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स. सो ये दोनों फैक्टर्स काउंटर बैलेंस होके हमने एटॉमिक रेडियस दो सेम हुआ करके डिस्कस किया. ओके, लेट अस सी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट ऑन ionization energy if you are taking group 13. If you are taking group 13, boron, aluminium, gallium, indium or thallium. I'm writing the period numbers. Period numbers. Boron is 2, aluminium is period 3, gallium is 4, indium 5, thallium is 6. Okay, what is the expected order down the group? What happens to ionization energy It remains constant. down the group? It remains constant. Decreases. Decreases because of the increase in size ना. Okay, अभी बोरॉन और एल्यूमिनियम में बोरॉन विल हैव ग्रेटर व्हेन कंपेयर्ड टू एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम और गैलियम में देखो, both of them are having similar size, but which has greater Z star? साइज तो दोनों का सेम है, एटॉमिक रेडियस. तो हमने एक्सेप्शन में पढ़ा एल्यूमिनियम और गैलियम, both of them are having similar size, but out of aluminum and gallium, which has greater Z star? Which has greater Z star? गैलियम गैलियम में ना, जिन सपोज 2 क्लासरूम्स है, दोनों क्लासरूम से मैं दो एक क्लासरूम में एक टीचर है, दूसरे क्लासरूम में दूसरा टीचर है. टीचर 1 is stronger when compared to teacher 2. Okay, in both the cases the और जो outermost student है और लास्ट में जो है सेम डिस्टेंस पे ही है. So in which case the teacher will be having more influence? हेलो, समझा नहीं क्या? टीचर 1 जिसमें ज्यादा स्ट्रांग रहेगा. now with the sizes, the classroom size, both the sizes are same. Okay, जिसमें टीचर ज्यादा स्ट्रांग होगा उसमें ज्यादा कंट्रोल रहेगा ना. यस सर. अभी एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों का साइज सेम है, but Z star of gallium we know that it is greater than aluminium. Why is Z star of gallium greater than aluminium? Because just before gallium we have filled 10 3d electrons. D subshell का shielding power और screening power it is less because of presence of 2 nodal planes. So इसलिए उसके अंदर Z star बढ़ चुका है. So aluminium will be having lesser ionization energy than gallium. Okay, gallium will have, down the group decrease होता है ना, gallium will have greater than indium. Okay, indium और thallium अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में ये जो thallium है, thallium से जस्ट पहले you will start 4f series. Okay, thallium से जस्ट पहले you will start 4f series. So because of the presence of 14 electrons, because of the presence of 14 electrons in case of thallium in the 4f subshell of thallium, again what will happen to the shielding power? Okay, I think आप लोग को थोड़ा दिखाना पड़ेगा. पीरियोडिक टेबल हमने ड्रॉ किया था ना. देखो इधर
एवरीवन, सभी लोग है लेक्चर के अंदर? Yes, sir. ओके। Yes. गैलियम से जस्ट पहले यहाँ पे 3D सीरीज हमको स्टार्ट हुआ. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट 3D सीरीज यू आर हैविंग एन इंक्रीज्ड Z स्टार इन द गैलियम. इंडियम में भी वैसा ही 4D सीरीज रहेगा. सो इसमें भी D है, इसमें भी D है, दोनों में फर्क नहीं आया. सो डाउन द ग्रुप फॉर देम द Z स्टार रिमेन्ड कांस्टेंट और साइज बढ़ने की वजह से देयर इज a decrease in the ionization energy. बट इंडियम से नीचे यहाँ पे 3D हो गया, यहाँ पे 4D हो गया. ये 5D सीरीज से जस्ट पहले, थैलियम से जस्ट पहले, you will also fill the 4F series. The electrons are also given in this case. इससे जस्ट पहले लैंथनाइड स्टार्ट होगा. ओके, 4F सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से और else 4F सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से again 4F orbitals are having a poor shielding power because of presence of 3 nodal planes, right? So because of poor shielding power, what will happen to the Z star inside thallium? It will increase. Yes, sir. Okay, so वो Z star बढ़ने के वजह से इसके अंदर ionization energy भी क्या होगा, बढ़ जाएगा. Okay, the Z star in thallium is increased very significantly because इसके अंदर क्या है, along with 5D, यहाँ पे 3D है, यहाँ पे 4D है, यहाँ पे 5D fill होगा. Along with 5D you are also filling 4F. 5D का भी poor shielding है, 4F का और भी poor shielding है. So Z star got significantly increased in case of thallium. Because of that increased Z star, there will be increase in the ionization energy. Is this clear? Yes, sir. Okay, so if you can observe the trend, एक मिनट सब लोग ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं. So indium will be having lesser than thallium. Is it an oscillating trend? पहले greater, lesser, greater, lesser. So there is an oscillating trend in the ionization energy of group 13. Okay, reasons क्या है यहाँ पे? The reason is poor shielding of 3D 10 electrons in gallium and consequently increased Z star. इस particular case में the reason is due to poor shielding of कौन से electrons? Poor shielding of 5D 10 electrons and 4F 14 electrons. Okay, and consequently increased Z star. Is this clear? And the trend we are having here is oscillating trend. Oscillating ionization energy trend. I hope this is clear to everyone. The first exception, very important. Direct question आएगा आप लोग को. They will give you the elements boron, aluminum, gallium, indium, thallium, and they will ask what is the correct order of ionization energy. Okay. Next. If you are taking group 14, if you are taking group 14, can you tell me the group 14 elements? Carbon, silicon, Silicon, germanium, tin, lead, tin और fluorine. lead. काफी है, वो वाला लास्ट वाला जरूरत नहीं. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड. एक्सपेक्टेड ऑर्डर बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का.
carbon down the group, what should happen to the ionization energy? Decreases, na? Decreases. Decreases. Carbon greater than, silicon greater than, germanium greater than. ये जो tin है, tin is less than lead. यहाँ पे क्या हुआ? ग्रुप 13 के बाजू में देखो, again let us go back to that periodic table. Give me 2 minutes. देखो, this is group number 13, this is group number 14. यूजुअली वो जो इफेक्ट दिखता है ना हमको शील्डिंग इफेक्ट का, इमीडिएट ग्रुप में दिखेगा. लाइक इसके लिए 3D सीरीज आया था ना, एल्यूमिनियम और गैलियम. सो जो भी इफेक्ट था इस पर्टिकुलर ग्रुप में दिखा हमको. फॉर दैट एटॉमिक रेडियस वी हैव सीन द वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस ओनली इन ग्रुप 13 ना, एक्सेप्शन में. बिकॉज इमीडिएटली और 3D सीरीज खत्म होने के बाद नेक्स्ट ग्रुप जो भी रहेगा उसके ऊपर ही इफेक्ट दिखता है. आगे वो इफेक्ट जो है ज्यादा दिखता नहीं है. ओके, बट इन दिस केस इफ यू आर टेकिंग ग्रुप 14, इन द आयनाइजेशन एनर्जी देयर इज नो इफेक्ट हियर, बिकॉज ये 3D होने के बाद ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी इसके लिए भी वैसा ही कुछ हुआ ना. ये 3D सीरीज जो भी रहेगा जर्मेनियम के अंदर भी रहेगा. सिलिकॉन में कुछ नहीं है. इन जर्मेनियम यू गॉट दैट 3D, बट द इफेक्ट इज नॉट seen in the ionization energy. For silicon and germanium there is no variation. Thallium or indium में there is difference because of 4f series elements and 5d series elements. 4f का shielding further pour होने की वजह से the effect is continued till group 14. tin और lead में भी there is some variation. Lead is supposed to have lesser ionization energy, but 4f series या 4f सबशेल का शील्डिंग पावर फर्दर पोर होने के वजह से द इफेक्ट इज आल्सो सीन इन ग्रुप 14. ग्रुप 13 इमीडिएट ग्रुप एलिमेंट्स के ऊपर तो इफेक्ट दिखेगा ही है, बट द इफेक्ट मे नॉट बी कैरीड टू फर्दर ग्रुप्स. बट इसलिए क्या हुआ, एल्यूमिनियम और गैलियम में देयर इज सम डिफरेंस, सिलिकॉन और जर्मेनियम में देयर इज नो डिफरेंस. इट इज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड ऑर्डर. But in case of indium and thallium, there is difference. The same difference can be observed in tin and lead. ये किस वजह से हो रहा है? Because 4f subshell has very very poor shielding power. और बहुत poor shielding power होने की वजह से the effect is continued till the group 14. So आप लोग if you are observing this, ये समझ में आया आप लोग को? So if you are observing the trend, केवल सिलिकॉन पे इट इज नॉट फॉलोइंग द रेगुलर ट्रेंड. सिलिकॉन ने टिन पे, टिन इज सपोज्ड टू बी ग्रेटर व्हेन कंपेयर्ड टू लेड, बट इट इज लेसर बिकॉज इन लेड अगेन यू आर हैविंग द इफेक्ट ऑफ पुअर शील्डिंग Pole of shielding effect 4F. ओके, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन्स. इस वजह से इसमें दिख रहा है थोड़ा. इज दिस क्लियर? ओके ओके. अभी थर्ड पॉइंट जो है, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, ये कॉमन ही है, बट आई एम लिस्टिंग आउट एज दिस इज इंपॉर्टेंट. इफ यू आर टेकिंग बेरिलियम एंड बोरॉन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ IE1 which has greater IE1 first ionization energy? Beryllium. Beryllium. Reason for that? Penetration effect. Fulfill. Okay. Penetration effect. What will be the order of IE2? be greater than Boron greater than beryllium. बोरॉन ग्रेटर देन बेरिलियम. वेरी गुड. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका ग्रुप जो है एक ग्रुप नंबर 1 जैसा हो गया, बोरॉन का ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 2 जैसा हो जाता है ना. ओके, Yes, sir. दिस इज द ग्रुप आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स. After removing first electron, so obviously
after removing the first electron the group numbers are shifted. वो जो 2 है 1 हो गया, 13 जो है वो 2 हो गया. Group 2 has greater ionization energy when compared to group 1 ना, so boron will be greater than beryllium. Okay, next last exception in case of transition elements 3D series में देखेंगे हम. In case of transition elements, tell me 3D series: scandium, titanium, vanadium, Vanadium. chromium, manganese, Manganese, iron, iron, Cobalt, nickel, cobalt, zinc. and copper. Zinc. zinc. What is the order of atomic radius we have seen? What is the order of atomic radius? Scandium to manganese. Scandium to manganese. Atomic radius decreases. Decreases. If atomic radius decreases, what should happen to ionization energy? Increase. Increases. So ionization energy जो है, it increases. Okay, I can write as Z star dominant करके तब देखा है ना हमने. Z star is dominant, which we have seen for atomic radius decrease, or atomic radius decreases. ये याद है ना सब लोग को, लेफ्ट टू राइट इन द 3D सीरीज स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक Z star is dominant when compared to the shielding effect initially. इसके वजह से atomic radius बड़ा है. And from iron to nickel, the atomic radius remained constant. Constant. Okay, so ionization energy is also almost constant. Last में क्या हुआ? Copper to zinc, Decrease. Decreases. the atomic radius got increased. Okay, copper to zinc, the atomic radius got increased. इस केस में ionization energy जो है, it also increases. Okay, ionization energy also increases because of the stable configuration of zinc. 4s2 होता है ना, fully filled है वो. Copper में it is 4s1 3d10. In case of zinc it is 4s2 3d10. 4s2 मतलब fully filled shell जैसा हुआ. Yes, sir. Yes, sir. Due to stability of configuration. Expected हमारा decrease होना चाहिए because there is increase in atomic radius. Okay, but due to stability of 4s2 3d10 configuration of zinc, there is an increase in ionization energy. Clear है? In Yes, case sir. of atomic radius, first it decreases, remains constant, then it increases. So उसके हिसाब से ionization energy देखा तो first it has to increase, remains constant, and that has to decrease. But it increases because of stable configuration of zinc, which is 4s2 3d10. S2 मतलब completely filled जैसा हुआ. Okay, is this clear? Next statement लिखता हूँ. Generally, in a period, ionization energy increases but the increase is not so regular. The increase is not so regular from scandium to manganese. From scandium to manganese, the values differ only slightly from each other. Only slightly from each other.
from iron to copper, ionization energy remains almost constant. From copper to zinc, ionization energy increases. Okay, ऊपर जो लिखा है वही है, और जो increase है, the increase is not so high, there is only some slight increase from scandium to manganese. Okay, ठीक है. Let us go to the next periodic property. What is the next periodic property? Electron affinity. Electron affinity or electron gain enthalpy. Very, very important again. Sir. Electron affinity or electron gain enthalpy. Sir. Yeah, tell me. Sir, what is the Dinant pair effect? अभी हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है क्या शिव प्रसाद? No, sir. So ask me that question after the end of the chapter if I am not covering it. Yes, sir. हाँ. Electron affinity और electron gain enthalpy. Affinity का मतलब tendency. First understand what is meant by affinity. Affinity is nothing but the tendency to accept an electron. If you are having an atom, if it is having a positive tendency to accept an electron, okay, if it is having a positive tendency to accept an electron, इसका मतलब क्या है? The system is achieving stability. कोई भी अपने आप में वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मतलब that system, the entire system, the atom plus the electron system must be achieving stability. तभी तो आप there will be positive tendency, right? If it is not having positive tendency, if it is not willing to take the electron, इसका मतलब the system is achieving some instability. Whenever there is stability, what will happen to energy of the system? Will it be decreased or increased? Increased. Whenever something is achieving stability, what will happen to the energy of the system? Decrease. Decrease it, right? Okay, so in that case, देखो, the electron affinity or electron gain enthalpy in दोनों both the terms are same, but there is slight difference. Electron gain enthalpy मतलब whenever the atom is gaining an electron, what are the heat changes? Already हमने देखा what is meant by enthalpy. Enthalpy is nothing but heat. Okay, so if it is having positive tendency, if something is having positive tendency, what will happen to the heat? Will the heat be released or will the heat be absorbed? Released. Because energy is decreased करके आप लोग ने कहा ना. If something is having positive tendency, इसका मतलब it is achieving stability. If it is achieving stability, energy must be released. Yes, sir. In that case, electron gain enthalpy will be negative. So affinity positive है तो electron gain enthalpy क्या हुआ? Negative हुआ. The values will be same. जितना तेजी से वो इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा. Okay, so the electron affinity and electron gain enthalpy are negative to each other. Electron affinity, if I am representing it by symbol EA, and electron gain enthalpy by symbol EGE, what is the relation among them? Electron affinity is minus of electron gain enthalpy. ये समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. I am again explaining. एक बार जिन लोग को समझ में नहीं आया सुनो. The affinity indicates tendency to accept an electron. If it is having a positive tendency to accept an electron, इसका मतलब the system is achieving stability. If stability is attained, always the system's energy must be decreased. In that case, energy will be released. Okay. So electron gain enthalpy उस particular scenario में negative रहेगा. Electron affinity positive रहा तो electron gain enthalpy negative होगा. Electron affinity negative हुआ तो मतलब it is not willing to take the electron. In that case मुझे जबरदस्ती से उसको electron देना पड़ेगा.
Okay, so in that case, the reaction will become endothermic. I need to forcefully put the electron inside the atom. Electron gain करवाने के लिए you need to give energy. So if electron affinity is negative, electron gain enthalpy will be positive. If electron affinity is positive, electron gain enthalpy will be negative. Both of them are negative to each other. First of all, let us see the definition of it. What is ionization energy? We have defined it as amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. So it involves with removal of electron. Electron gain enthalpy involves giving of electrons. Okay. So I'm writing the definition. Please observe. Electron affinity is defined as the amount of energy released when an electron is added into the outermost shell. Always addition of electron or removal happens in the outermost shell. Okay, into the outermost shell again of an isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom. इस केस में क्या हो रहा है देखो, the energy is being released when an electron is added to the outermost shell of an isolated outermost shell of an isolated gaseous atom. So is the reaction exothermic or endothermic? Exothermic. Exothermic. Exothermic, because we are saying that energy is released. We will later understand, will that be always exothermic or there can be endothermic too. Okay, but general definition says that the energy is released. If there are any exceptions, we will see that, but in general, the energy will always be released when an electron is added to outermost shell of an isolated gaseous atom. So if you are having a gaseous, if you are putting an electron inside that particular A gaseous, it will be converted into A minus gaseous, plus in the process there will be release of energy. Some Q amount of energy is released. Okay. If you don't want to show that energy, you will write it in terms of delta H. A gaseous plus electron gives rise to A minus gaseous. In this case, delta H electron gain. It is represented as electron gain. H indicates enthalpy. So delta H is matlab electron gain enthalpy equals to, you will write this as minus Q. Okay. You can also show this as amount of energy released is nothing but electron affinity. और इस particular case में delta H electron gain is equals to minus electron affinity. Any doubt in this representation? Electron affinity is always taken as positive value. So इसलिए इतना energy release हुआ है, ये positive value है ना. But if you want to show that in terms of delta H will be a negative value. If you are having a positive tendency, it will be releasing energy. Exothermic reaction. So delta H Eg is equals to minus Ea. I hope these equations are clear. Any doubt? No, sir. Okay. As energy is released, I am showing the energy in product side.
If you don't want to show that in terms of products, you can write that as delta H. As it is an exothermic reaction, you are putting a negative. Energy is released. Okay. हमने characteristics of the process करके ionization energy के लिए पढ़ा. इसके लिए भी वैसा ही कुछ करते हैं. Characteristics of the process. Okay. Tell me, is it an exothermic or endothermic reaction? Exothermic process. Exothermic. Good. Cation बना, anion बना. Anion बना. Anion. And then Anion is formed. Is it an oxidation process or a reduction process? Reduction. Gain of electrons, right? So this is reduction of the atom. Okay. What will be the units again? Same. Electron volt Per per atom. atom, Kilocalories per mole. Kilojoule per mole. joule per atom, kilojoules per mole or Kilocalories. kilocalories per mole. Okay. ठीक है. हमने successive ionization energies करके कुछ concept पढ़ा. What happens in successive ionization energies? There will be continuous increase in the ionization energy if you are removing the electrons successively. IE3 is greater than IE2 greater than IE1, or whenever there is a change in shell, the ionization energy suddenly jumps. Okay, so all the ionization energies, are they endothermic or exothermic? कोई भी ionization energy exothermic जैसे change हुआ क्या? No, right? All the ionization energies are endothermic, but in case of electron affinity, in case very, very important, first electron affinity is only exothermic. First electron affinity का मतलब क्या है? The heat changes which are happening when you are adding the first electron. Only the first electron affinity will be exothermic. Consecutive electron affinities, मतलब second electron, third electron, ये सब add करने के लिए the electron affinity will always be negative or electron gain enthalpy will be endothermic. Okay, either first electron affinity के अलावा the better word is electron gain enthalpy. First electron gain enthalpy is only exothermic. Consecutive electron gain enthalpies consecutive और successive लिखना है क्या? Consecutive statement clear है? Success. इधर सही है? Okay. Successive electron gain enthalpies are endothermic. Let us understand why. Suppose if you are taking an example, you are having oxygen gas, you are giving an electron to it and it is converting into O minus gaseous. In the process, delta H electron gain enthalpy is minus 141 kilojoule per mole. If the electron gain enthalpy is minus 141, what is the first electron affinity of oxygen? It will be plus 141 kilojoule per mole. लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, Now sir. I am giving one more electron to this O minus, which will lead to formation of O2 minus. आप लोग को ऐसा कुछ लग सकता है O2 minus noble gas configuration हो गया, so और stability आ जाना चाहिए, so और energy release हो जाना चाहिए. But if you can observe the second electron gain enthalpy, ये delta H Eg1, delta H Eg2 लेते हैं. This is
प्लस 844 किलो जूल्स पर मोल। देखो कितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। सर ये reason for 141 और 844 कैसे है? नहीं, these are experimental values, no need to remember anything, there is no formula for this, experimentally determined. Okay, don't worry. Okay, देखो, the second electron gain enthalpy is endothermic, the first electron gain enthalpy is exothermic. This is true for any of the elements. Always only the first electron gain enthalpy will be exothermic. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद I have converted the species into negatively charged species. अब ये नेगेटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन देना, there will be repulsive forces among these two species. So whenever I am trying to put an electron in O minus, I need to put that against those repulsive forces. Okay, so I need to give some energy. Hence the process will always be endothermic. The second, third, fourth, fifth जो भी है वो सारे एंडोथर्मिक ही रहेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सी, ऑक्सीजन एक न्यूट्रल एटम है, उस ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हम. सिस्टम को स्टेबिलिटी कैसे मिला? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन इंडिविजुअली, आई एम टेकिंग द इनटू कंसीडरेशन दिस इलेक्ट्रॉन. इफ द इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट अलोन, it is not experiencing any of the attractive forces. सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा. Yes, sir. Not able to. Again, sir. सर हे काय बरं चालेल. Excuse me again. कहाँ तक सुना आप लोग? इधर बोर्ड में उधर. Yeah, the first electron gain enthalpy is exothermic. Successive electron gain enthalpies are endothermic. The reason for this is, initially if there is only one electron and you are having oxygen neutral atom, on putting an electron, ये जो oxygen atom के लिए Z star कम हुआ है. But if you are seeing for the overall system, this electron is coming under the attractive forces of the nucleus of the oxygen. Whenever there are attractive forces, the stability will be increased. So इस particular electron को ज़्यादा stability मिलने के वजह से overall system is releasing energy. Okay. उसके लिए मैं एक example दे रहा था. If in the class there are 10 students and if there is one student who is not having any education, if I am bringing that particular student inside the class, okay, उस particular student के लिए जो education नहीं मिल रहा था, उसके लिए बहुत ज़्यादा stability मिलेगा ना. ये 10 students को थोड़ा बुरा लग सकता है because the concentration of the teacher will be distributed now.
Okay, but overall देखा जाए तो the system is achieving more and more stability or the system is benefited. और जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसको ज्यादा फायदा मिला है ना. अभी दूसरा और एक सिचुएशन देखते हैं. अभी एक स्टूडेंट लेके आया, 11 स्टूडेंट हो गया. अभी नेक्स्ट डे मैं और एक स्टूडेंट को लेके आ रहा हूँ. Now the 10 students will definitely have the problem. Okay, because उनके ऊपर concentration और कम हो जाएगा. Moreover, नया स्टूडेंट आने की वजह से उनके बीच में बातें होने की वजह से the system will be destabilized. Repulsive forces से ज्यादा होगा. Similar thing happens. Initially एक इलेक्ट्रॉन को लेके आया मैं. The system is stabilized because this electron is under the attractive forces. अभी ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं मैं. नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होगा. So I need to put extra effort in order to bring the electron inside that negatively charged entity. So I need to give some energy, supply energy. Hence the reaction is becoming endothermic. Agar if we are seeing the overall process, उससे पहले एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं. The second electron gain enthalpy is endothermic as it requires energy to overcome the interelectronic repulsions between the incoming electron and the negatively charged anion. Okay. Moreover, after addition of one electron, the Z star is also decreased, right? The Z star is also decreased after addition of electrons. Okay. ठीक है. Overall process, if you are adding equations 1 and 2, can I say O gaseous plus 2 electrons, O minus cancel होगा, convert into O2 minus gaseous. What will be delta H total in the process? क्या हुआ? It is plus 703. So the process of formation of polyvalent anion. Polyvalent मतलब you are having more than one charge. Okay. The process of formation of polyvalent anion. Is it endothermic or exothermic? Endothermic. Endothermic, right? Endothermic. Always. This is true for anything. N3 minus बनाओ या O2 minus बनाओ, S2 minus बनाओ. If you are forming polyvalent anion, the overall process will always be endothermic. Very important. याद रखना. The process polyvalent anion मतलब polyvalent anion मतलब you are adding more than one electron. Poly मतलब more, मतलब more than one. Mono मतलब one. Poly is considered as more than one. Okay. O2 minus, O3 minus, वैसा. The process of formation of polyvalent anion is always endothermic. Is this clear? Endothermic क्यों हुआ? क्योंकि second electron gain enthalpy is more positive when compared to the initial negative first electron gain enthalpy. Okay, ये हमेशा वैसा ही रहेगा. This value will always be having a greater magnitude when compared to this. I hope this is clear.
याद क्या रखना है? Only the first electron gain enthalpy will be exothermic. Successive electron gain enthalpies will be endothermic. What is meant by electron affinity? Electron affinity is the tendency to accept an electron. जितना ज्यादा पॉजिटिव टेंडेंसी रहेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो. ओके, पॉजिटिव टेंडेंसी कब ज्यादा रहेगा? If its Z star is more. We will compare the factors affecting electron affinity in the next lecture. Okay. Thank you everyone.